Today we can go to the second unit, that is regarding climatology. इसके अंदर we have to study about the atmosphere, atmospheric compositions, atmospheric structure, the process what is happening in atmosphere, climate, weather, ये सब के बारे में we want to study in this unit. So the first topic that we want to go is the structure and composition of atmosphere. So before going to understand about the structure and composition, we want to understand what is an atmosphere. So atmosphere is a gaseous envelope that surrounds the Earth's surface. जो Earth surface का ऊपर multiple layer में जो gas का वो concentration है, envelope है, cover है, that we usually say it as atmosphere. This is not only for Earth, it is for many planets there is atmosphere, but the combination is different. Sometimes it is so minute, thin hoga, ऐसा फिर भी we have the atmosphere in many planets. But right now we are going to discuss about the atmosphere of planet Earth. So atmosphere is a multi-layered gaseous envelope surrounding the planet Earth. So what is it significant? Because almost all the gas which provides necessary, which act as necessary substance for life is existing in this particular multi-layered gas envelope. इसके अंदर है वो life का जो essential gases है, that is being provided by this atmosphere. That is why atmosphere is very relevant for planet Earth. Life is possible only because of the existence of this atmosphere in the Earth. It is significant component of natural and physical environment and the biosphere. Biosphere means the sphere which is having life. तो बायोस्फीयर इकोसिस्टम के लिए भी ये जरूरी है, significant है. Why? Because it provides all the gases necessary for the substance of life forms in the biosphere. ये life को यहाँ अर्थ में देखने के लिए ये बहुत जरूरी है. And what makes this atmosphere possible? अभी गैस है तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होगा that will move outward. तो ऐसा है तो it will empty to the space. ऐसे empty था, but it has not happened. Why? It is because of the gravitational force that is being exerted by the Earth. Earth ने gravitational force exert करके ये जो gases को ये Earth का particular range में रख दिया है, रुका दिया है. That is why we are having a good sustained atmosphere. So gravity is the force which sustains atmosphere. The density of the atmosphere decreases outward because the gravitational attraction, as we know that, वो दूर होने से अभी ऊपर जाने से the gravitational force will get reduced. वो gravitational force reduce हो जाएगा. Gravitational attraction of the planet get reduced. So what happens? The atmospheric concentration will decrease. तो सबसे नीचे बहुत ज्यादा atmospheric concentration है. Atmospheric concentration means the components of atmosphere like gases, water, water vapor, water droplets, dust particles. ये सब सबसे ज्यादा होगा नीचे at the bottom layer. And when it moves to upward, what happens? The quantity of the atmospheric gases, ये सब धीरे-धीरे it will start reducing. It will come, वो तो कम हो जाएगा. So the density of the atmosphere decreases outward because the gravitational attraction of the planet, which pulls the gases and aerosols inward, is greatest
close to the surface. तो surface के सामने ही बहुत ज्यादा है. When it's move outward, it will start reducing. And because of the same, there is no precise top of the atmosphere. Atmosphere कहाँ तक है ये पूछने से still we are not aware. इतना limit तक है ये नहीं बोल पाएगा. It extends to 10,000, 20,000 of kilometer इसका extension है. But we know that there is presence of atmosphere at up to this range. But we can't precisely say that this is the topest portion of atmosphere. ऐसा नहीं बोल पाएगा. So atmosphere, what is that? It is a multi-layered gaseous envelope that surrounds the Earth's surface. Earth surface को cover कर रहा है. And second है, it is a significant component for the life. Sci-fi के लिए ये तो बहुत significant है because it provides all the necessary gases. And third one is the gravity is the force which sustains the atmosphere. And the fourth one, there is no precise top of the atmosphere. एक minute. And the next important feature of this atmosphere is it acts as a shield to prevent ultraviolet radiation coming from the sun. So ultraviolet radiation ज़्यादा होने से क्या होगा? Even that will cause skin cancers. That will cause different kind of health problems. And another main thing is that it will increase the temperature. It will also increases the temperature of the Earth surface. Earth surface का temperature इसमें भी इसका influence होगा. We know that is mainly influenced by the infrared rays, but even if there is more ultraviolet rays, that also brings some sort of temperature rise in the lower areas. So वो तो uncontrolled होने से बहुत मुश्किल है. So first, the main important thing that is done by atmosphere is it prevents the ultraviolet radiation that is emitting from the sun, which is very harmful for the life. And second one, it warms the surface of our planet. Atmosphere warms the surface of the atmosphere. ये तो ऐसा है. If this is the surface, surface में पहले जो short wave radiation ऐसे आ जाएगा, अंदर घुसेगा. So atmosphere allows a certain limit of solar radiation to enter into the surface. वो अंदर आने के लिए it will permit. But what happens is when it goes back, it will go as long waves. ये long wave जैसा ये तो अंदर घुसे बाहर जाएगा. So it will prevent this long waves to go outside. वो इसके अंदर ही इसको तो रखने के लिए कर देगा. That is infrared rays को ये तो it will prevent to go outside. It will prevent it maximum. अभी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने से why there is global warming? It is because of this same feature. Atmosphere में कार्बन डाइऑक्साइड it will prevent this kind of rays to go back. तो नीचे जो surface में बहुत ज्यादा temperature बढ़ जाएगा. So that is how the atmosphere warms the surface of our planets. Then it controls and helps in development of plants and animals in the earth. जैसे अभी we know that the primary source of energy is sun. वो sun का जो energy है उसको तो अंदर देना, it should allow certain amount of energy, but the atmosphere controls that amount. Atmosphere has the ability to control. अभी atmosphere पूरे solar radiation को अंदर घुसने देने से क्या होगा? वो it will not allow the plants or animals to grow. It will destroy the life itself. So another important character of this atmosphere is it controls and helps in the developments of plants and animals in the Earth's surface, and helps in weathering and exogenic activities. As we know, in the geomorphology, we have studied that the weathering agents like water, running water, wind, glaciers, all these are
the interaction of these agents with atmosphere, जो atmosphere से अभी पानी मिलने के लिए what we need hydrosphere से वो precipitation चाहिए. Precipitation we know that happens in atmosphere. अभी wind movement, the movement of air from high pressure to low pressure, so pressure condition that is also be that happens in atmosphere. Atmospheric layer में ये हो रहा है. So that is how the atmosphere helps in weathering and exogenic force activities. So all these are correlated. If you look the geomorphological feature as well as the climatological feature, that all these features are interrelated. If you look, this is the Earth's surface and this is the atmosphere. And on an average, it is estimated that the atmosphere is extend between 16,000 to 29 kilometers from MSL. MSL means mean sea level. Sea level के ऊपर. तो उधर से 16,000 to 29 kilometers तक atmosphere है. But we don't know the precise end. कहाँ पे है ये atmosphere end होगा वो पता नहीं है, क्योंकि ऊपर जाते जाते वो एयर का डेंसिटी कम हो जाएगा. एयर डेंसिटी विल कम डाउन, प्रेशर भी कम हो जाएगा. देयर इज स्लाइट प्रेजेंस, very feeble है उसका presence atmosphere का, but still there is some sort of atmospheric feeling at that up to that level, that is maximum up to 29 kilometer we can expect the presence of this atmosphere. Then atmosphere the significant amount of atmosphere we can feel up to 800 kilometer only. अभी total atmospheric presence है 29,000 kilometer तक, and atmosphere significant atmosphere is only up to 800 kilometer तक इसका presence. So when we are dividing the atmosphere, we will maximum go to this 800 kilometer. After that we will say some other names or we will categorize it different layer. So maximum up to 800 there, and within this 800 kilometers 97% of the atmosphere is confirmed to 29 kilometers from mean sea level. So 97% of the atmosphere. So सोचो 90 significant है 800 kilometer तक. तो 800 kilometer में ही इसमें से atmosphere if you look 97%, remaining only 3% extends from 29 kilometer to 29,000 kilometer. उतना check करने से we will get only 3%. Remaining 97% of the atmosphere is confined only to this 29 kilometer. And again, if you look within this 97%, 50% of the atmosphere and the weathering processes, and the weather processes or the materials that is available in the atmosphere lies within altitude of 5.60 kilometer or 6 kilometers. So maximum 50% of the atmosphere lies within the 6 kilometer के अंदर या 5.6 kilometer के अंदर we can feel the 50%, and the remaining 47% is between 6 kilometers to 29 kilometers, and the remaining 3% lies between 29 kilometer to 29,000 kilometers. That is how the atmosphere is distributed. Atmospheric gases and its materials are distributed. That is why this happens. This is mainly because of the gravitational force. Gravitational force surface में ज़्यादा है. At the bottom layer, the gravitational force is very high. That is why most of the gases, almost all the weather phenomena, the aerosols, whatever the materials available in the atmosphere, is maximum concentrated in this bottom layer. That is up to 6 kilometers. So distribution, if you look, I will say again, this is the surface layer. So 6 kilometers तक. अभी सोचो this is 6 kilometer, तो इसमें 50% इसमें ही आ जाएगा. Then remaining यहाँ if you look 29 kilometer तक, 29 kilometer तक ये कैसा है, इसमें होगा remaining 47
percentage, 47, and from 29 kilometer to 29,000 kilometer में कितना होगा? Only 3% of the atmosphere. इसका distribution ऐसा है. Then coming to the composition of atmosphere. तो atmosphere के बारे में बोल दिया है. It is a gaseous envelope that surrounds. Gaseous envelope है, and it consists of multiple components. It composes of multiple constituents. So ये क्या क्या है? The main components of atmosphere are gas, water vapor, and aerosols. Gas, water vapor, and aerosols. This makes the atmosphere. क्योंकि ये भी कुछ चीज तो इसमें नहीं होगा. Mostly the finer particles, dust particles होने भी there will be finer particles होगा. नहीं तो कुछ gas होगा, gaseous materials होगा like nitrogen, oxygen, argon, ये सब चीज होगा. नहीं तो water vapor होगा. So these are the major components of atmosphere. So gas includes nitrogen and oxygen. Mainly 99% of the atmosphere is composed of these two elements. One is nitrogen and second one is oxygen. And these are the most common gases that is available in atmosphere. Maximum है nitrogen, नीचे है oxygen. And dry air is composed of about 78.1%, 78.59% है nitrogen, and the oxygen is about 20.9% or 21% oxygen compound. They are constant and permanent gas, and there is variable gases also, but this nitrogen and oxygen, as we say, these are permanent or constant gases है. इसमें ऐसा कुछ changes ज़्यादा नहीं होगा. Mostly, even if it is consumed, it will be replaced. वो consume करेगा, फिर ये तो replace करेगा. That is how it is moving. But right now, the amount of oxygen is comparatively reducing because it is converting to carbon dioxide due to the over exploitation of human activities. So next, second one is water vapor. The gases, so the gaseous form of water. It is also gases. So gaseous form of water है water vapor. Present in the atmosphere, we will usually say it as water vapor. So इसमें क्या है? For condensation process, so we need this water vapor should be generated. ये तो कैसे है? नीचे पानी होगा, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ये तो इवापोरेट करेगा, ऊपर आ जाएगा as a form of vapor, as in the form of vapor, and the process we usually say it as evaporation. तो ये ऊपर आ जाएगा तो ये ऊपर में क्या है? टेम्परेचर कम होगा, तो इधर ये हॉट वाटर वेपर will get cooled down and it will fall as rainfall or any sort of precipitation. आइस होगा, आइस फॉल्स होगा, ये तो रेनफॉल्स होगा, जो भी हो प्रेसिपिटेशन का डिफरेंट तरीके से ये तो नीचे आ जाएगा. So for condensation process and precipitation process, the water vapor is the main responsible agent. And water vapor, when it's converted to water, when it's converted to vapor, we will say it as evaporation. And it's contained about 0.02% in polar region. Polar region में usually the polar regions are dry. Actually, in the equatorial region, we know that the humidity तो बहुत ज़्यादा है, is very high, and in the polar region, the humidity or the water content is comparatively very less. Because of the same, the water vapor content, for water vapor to be present in the atmosphere, we need temperature. In the polar regions, temperature बहुत कम है. Because of that, evaporation should not happen there,
and what happened? There will be less concentration of water vapor. So in the polar region, because of less evaporation, because of the cold climate, the water vapor present is only 0.02% on an average. And at the same time, it will be about 5% in the tropical region or near to equatorial region. यहाँ क्या है? The temperature बहुत ज़्यादा है, so that will helps in evaporation. Evaporation को help करेगा, and water will get evaporated easily. And that's why there is an average of 5% of water vapor in tropical region. So 90% of the water vapor is available within 5 kilometers. Just like the gas, it is also water vapor is also available in the bottom layer. Because of same reason, one evaporation का एक limit है, दूसरा है gravitational force. Gravitational force will pull these materials towards the Earth's surface. Then water vapor absorbs parts of incoming solar radiation from the sun and preserve the earth re-radiated heat. तो जैसे हम बोला है वो small wavelength है तो it can easily penetrate, and when it goes back ऐसा small wavelength means इसका छोटा छोटा ऐसा wavelength होगा, so it can easily penetrate to anywhere, but when it touches the earth surface it will go back as large wavelength. So large wavelength होगा, so that will get obstructed by this water vapor. नहीं तो जो carbon dioxide है, नहीं तो dust particles है, that will prevent this strong waves to go back to the space. So what happens? There will be radiated वो return आ रहे हैं वो इधर रुका देगा, and that will create heat in the lower atmosphere. That is why we feel temperature even in night time. Otherwise what happens? अभी sun नहीं है, radiation नहीं है, जो radiation आता है वो जल्दी वापस जाएगा, तो यहाँ sun evening time में पूरा ठंडा होना था, लेकिन that will not happen because of this process. And water vapor is also helps in the same process. And the third one is aerosols. So aerosols, what is that? Suspended particulate matter or suspended particles in the atmosphere, including solid particles of varying size, liquid droplets. अभी वाटर बोलने से भी these are all aerosols. क्या है? वो मटेरियल है. अभी वोल्केनिक इरप्शन हो गया तो क्या होगा? ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल बाहर आ गया है, तो इसमें क्या होगा? डस्ट होगा, एशेस होगा. अभी फैक्ट्री से वो डस्ट आ गया तो इसके अंदर बहुत कुछ पार्टिकल्स होगा, तो ये सब चीज है वो दैट इज एक्चुअली डस्ट पार्टिकल्स है, नहीं है तो कुछ मटेरियल पार्टिकल्स होगा, नहीं है तो पानी का ड्रॉपलेट्स होगा, ये कुछ चीज होगा. तो इन सब को इन एज ए कॉमन और इन जनरली वी विल कॉल दिस एज aerosols. So याद रखना है what is aerosols. These are the suspended particles in the atmosphere, generally found in the lower layer. As gas is also found in lower layer, water vapor is also found in lower layer, and the aerosols are also found in maximum in lower layer of the atmosphere. So इसमें for the creation of clouds we need aerosols. क्या है? अभी एक कुछ ऐसा particles होने चाहिए, तो what happens? The water vapor gets condensed in the form of droplets around this dust particle. तो water vapor जो evaporation के वजह से आ रहा है, ऊपर आ रहा है, that will stick here. इस particle में stick हो जाएगा, and that will cool down, and finally this will form bigger clouds. वो तो ऐसा cloud बन जाएगा. So there should be a small center for there should be some solid चीज होनी चाहिए for the water vapor to develop, water vapor to condense करने के लिए उसको तो बैठने के लिए एक जगह चाहिए. So aerosols are kind of place for the water vapor to come and stick. वो stick हो जाएगा, धीरे धीरे वो develop हो जाएगा, and that will be converted to cloud, and finally
the precipitation also happens. So examples: dust particles from volcanoes, salt particles from sea. ये सब इसका examples है aerosols का. So these are the major components of atmosphere. One is gas, second one is water vapor, and third one is aerosol. Let's see what are the important gas. Be nitrogen and oxygen. I said nitrogen, oxygen, and argon comes with 99.9% of the total volume of the atmosphere. Comprises of these three gases. इसमें 99% होगा nitrogen and oxygen. And the third important gas, sometimes there it will be asked, which is the third important component of atmosphere, that is argon. Argon है, इसमें percentage में देखने से argon is the third largest one. It is about 0.93. That means almost 1% ये हो गया. Remaining carbon dioxide, neon, helium, krypton, xenon, hydrogen, ये सब मिला के 0.1% का होगा. उतना बहुत कम है. अभी देखो 0.036 है कार्बन डाइऑक्साइड. Now it is rising still up. It can come up to the level of argon. उतना कम है. Then neon है 0.002. Then helium है 0.0005. Krypton है 0.001. Then xenon तो बोलने के लिए भी नहीं है. हाइड्रोजन also ये भी बोलने के लिए नहीं है, उतना कम है. If you look at, if you take the entire region, देखो majority of the region is dominated by nitrogen है, then oxygen है. ये याद रखना है, nitrogen, oxygen and argon. ये याद रखना है. Along with that, right now we want to understand how the percentage of carbon dioxide also, that is 0.036. तो इतना सा याद रखना है. अभी कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो अकेले से इतना सा है. Last one is other gas सब मिला के argon 0.96%. That includes argon. Argon means 0.93. इसमें से argon से ही है. So these are the major gases that is available. अभी इसमें देखो water vapor आ रहा है. अभी ये गर्म हो गया है. अभी this is volcanic crater होगा तो अंदर पानी है तो क्या होगा? नहीं तो गीसर होगा. तो पानी गर्म होगा तो ये evaporate होकर ऊपर जाएगा. And at the same time, these are aerosols. अभी यहाँ बहुत कुछ particles होगा. अभी this is actually the smoke coming from factories. Factories से smoke आ रहा है तो इसके अंदर बहुत कुछ particles होगा that will spread to the atmosphere and will create aerosols. So these are the major components of atmosphere. Now we can go to the structure of atmosphere. तो zones of spherical cells और layered structure है atmosphere का. अभी earth surface है. This is the earth surface. ऐसा shape है ना, geoid. नहीं है तो spherical shape है. earth का तो क्या होगा? ऐसा एक तो shape है तो इसके ऊपर first layer आएगा, second layer, ऐसा multiple layered structure है हमारा atmosphere के लिए. So based on the characteristics of temperature and air pressure, based on, so we can divide the atmosphere in two classification. One is based on temperature and pressure, and another is based on the chemical homogeneity and heterogeneity. वो based on, we can divide the atmosphere. So first classification is based on temperature and pressure. So temperature and pressure में we can divide the atmosphere basically into 4. इसमें इसका subdivision भी आएगा, but the main, if the main structure of the atmosphere comprises of 4 spheres. One is troposphere, second one is stratosphere, then mesosphere and the thermosphere. If you look at this picture, you can see troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. सबसे नीचे troposphere है, उसके ऊपर stratosphere है, then mesosphere है, then thermosphere है. So let's see each of this in detail. The first one is troposphere, the lowermost layer of the atmosphere.
सबसे नीचे का जो है जहाँ पे बायोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, जहाँ पे लाइफ ज्यादा है, दैट इज इन troposphere. It extends 17 kilometer. I am saying on average there is 17 kilometer over equator and 9 to 10 kilometer over the poles. That may varies. अभी climate के अभी season different season में different होगा, but approximately on an average the height of the troposphere in equator region is 17 kilometer, 15 to 20 kilometer के बीच में होगा, and in the polar region it is 9 to 10 kilometer over the poles. And I said it is purely based on temperature and pressure. तो इसमें देखो pressure कितना है? In equatorial region the pressure is 100 millibar and in the polar region it is 250 millibar. Why? Pressure है, pressure ज्यादा कहाँ पे होगा? Where temperature is low. When the temperature is low, there will be high pressure. There will be high pressure, and vice versa. When there is high temperature, there will be low pressure. So usually, as we know that in the equatorial region, the temperature is comparatively high than the polar region. That is why in the troposphere area, in equator, the air pressure is 100 millibar, and in polar region it is 250 millibar. And the word coming from tropos, that is meaning mixing or turbulence. यहाँ पूरा गैस है, aerosols है, water vapor पे इन सब का पूरा mixing हो रहा है, इसका turbulence हो रहा है. That is why it is known as this. It got its name troposphere because tropos means mixing or turbulence है. And it is also known as turbulence zone or the convective zone or convection zone. Convection means convective current, ऊपर से जो ठंडा होकर जो गर्म होकर ऊपर आकर ठंडा होएगा, तो ठंडा होने से ये वापस नीचे आएगा, तो convection happens. So that is why it is also known as convective layer as well. So climatically it is very important. All weather phenomena occur here. अभी जो precipitation हो, नहीं ये तो high pressure, low pressure हो, cold climate हो, hot climate हो, all the features, fog हो, mist हो, जो भी weather phenomena, whatever you are saying, that will be the part of this troposphere. Troposphere के ऊपर we don't go for this climatic. Yes, there is minor changes, but large kind of climatic change or the weather phenomena is usually happens at this tropospheric zone. And even the jet stream, upper atmospheric, upper troposphere area mein you can see jet streams and tropical cyclones. It also happens in this particular zone. So ये भी पूछ सकता है, tropical jet streams usually happens कहाँ पे है? So usually in the upper tropospheric region में है. And 75% of the gaseous mass occur here. 75%. तो उसके बाद में तो gaseous बोलने से भी कुछ नहीं है, 25% है. कहाँ से? तो 17 kilometer to 29,000 kilometer तक remaining 25% of gases है. So that much of influence this troposphere for the atmosphere. Life is possible mainly because of this troposphere. So regular, and you want to get some of the terms here. One is normal lapse rate, then inversion of temperature, then seasonal variation. So इसमें normal lapse rate, there is high chance of asking for inversion of temperature. So inversion, normal lapse rate, there is a normal lapse rate for troposphere. What is that? Regular decrease in air temperature with increasing height. This is the lower area, the surface there. When it moves upward, there will be decrease. Oh, नीचे से ऊपर जाने तक there will be decrease in air temperature with increase in height. तो कितना temperature कम होगा? That is 6.5 degrees Celsius per kilometer. For each 1 kilometer, there will be a decrease of 6.5
5 degrees Celsius इतना कम हो. So that is called this process, the regular decrease in the air temperature on an average of 6.5 degrees Celsius per kilometer in the troposphere. We will usually term it as normal lapse rate. ये याद रखना है, normal lapse rate. Then temperature goes up to minus 70 degree. So at the top of the troposphere, there is a transition zone called tropopause. So till tropopause, the temperature will reach up to 70 degree, minus 70 degree, plus नहीं minus उतना ठंडा हो जाएगा. 0 degree में ही we will get ice. So minus 70 degree Celsius है at the top of the troposphere. So lower atmosphere is characterized by inversion of temperature. Warm air lies over the cool air. तो ऐसा है, inversion of temperature हो सकता है. अभी in common क्या है, ऊपर जाने से temperature कम होगा, but there are some cases where temperature एक लेयर में वो this is actually regional है. कुछ जगहों पे ऐसा है where warm air, अभी hot air ऊपर होगा and cold air नीचे होगा. cold air नीचे and hot और warm air ऊपर आ जाएगा. So there will be inversion. असली में ऊपर जाने से ये cold होनी चाहिए और नीचे hot होनी चाहिए था, लेकिन instead there will be inversion, temperature inversion. ऊपर जाने से temperature ज्यादा हो रहा है. That process we will say it as inversion of temperature. ये नाम भी याद रखना. What is normal lapse rate and what is inversion? In common, there should be a decrease in the temperature, that is 6.5 degrees Celsius per kilometer में कम होनी चाहिए, but at some stages there will be increase in temperature. That process we will say it as inversion of temperature. Inversion of temperature not happens everywhere. It happens in local condition. Which local condition में when the warm air lies above the cold air, these conditions happen. And there will be seasonal variation in the height of troposphere. That I already told you. Seasonal variation में अभी कुछ ठंडा दिन होगा ऐसा है तो हाइट ज्यादा कम होगा, नहीं तो ज्यादा होगा, ऐसा सीजनल वेरिएशन भी इसका हो जाएगा ट्रोपोस्फियर का हाइट में. एंड द ट्रांजिशन जोन बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर, ये भी पूछ सकता है. व्हाट इज द नेम ऑफ जोन व्हिच सेपरेट ट्रोपोस्फियर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर? इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज. दैट इज अ ट्रांजिशन जोन. तो इसमें थोड़ा ट्रोपोस्फियर का कैरेक्टरिस्टिक भी होगा, थोड़ा स्ट्रेटोस्फियर का कैरेक्टरिस्टिक भी होगा. तो नेक्स्ट वी वांट टू मूव टू स्ट्रेटोस्फियर. द लेयर जस्ट अबव द ट्रोपोपॉज. ट्रोपोस्फियर है सबसे नीचे, वो इसके ऊपर एक ट्रांजिशन जोन है, दैट इज ट्रोपोपॉज. देन above troposphere there is stratosphere. This has been discovered by 𝐻𝐴 बोर्ड. ये हमारा ट्रोपोस्फियर के बारे में भी ये 𝐻𝐴 बोर्ड ने ये डिस्कवर किया है. नहीं ये तो इसके ऊपर ज्यादा उसने ही पढ़ा है. तो स्ट्रेटोस्फियर भी ये बोर्ड ने डिस्कवर किया है ड्यूरिंग 1902. So what happens here? The average temperature यहाँ. So I told this is division is mainly based on temperature and pressure है. यहाँ क्या होगा, जो एक जगह तक टेम्परेचर कम हो जाएगा, that is troposphere में, उसके बाद ये टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग. यहाँ है प्लस, यहाँ टेम्परेचर माइनस है, ट्रोपोस्फियर में माइनस है, यहाँ ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. And that stage we will say that is in stratosphere. And the average temperature here is between 0 to 5 degrees Celsius. तो पहले तो कहाँ था 70 डिग्री, minus 70 डिग्री तक आया था, लेकिन at the top of the troposphere यहाँ कितना हो गया 0 to 5 डिग्री Celsius. तो minus 70, minus 60, minus 50, तो धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ ज्यादा हो जाएगा. And the pressure at the maximum height is 1 millibar. तो ऐसा है ट्रोपोस्फियर में प्रेशर भी कम है, टेम्परेचर भी कम है, बट
when comparing to troposphere, the temperature is slowly increasing. The average height of the troposphere is 50 kilometer. तो पहले का कितना था 70 in the equator and 9 to 10 in the polar region. लेकिन यहाँ कितना है stratosphere में average is 50 kilometer. This layer is very dry as it contains little water vapor. इसमें water vapor नहीं है, तो water vapor 5 किलोमीटर मैक्सिमम आपको 5 किलोमीटर तक है. तो ये कितना किलोमीटर का है 17 किलोमीटर के ऊपर है. सो यहाँ वाटर वेपर कुछ भी नहीं है, तो ये एक ड्राई रीजन है. Then air temperature in the troposphere is increasing with altitude, तो increase हो जाएगा, प्लस है. That is why it has from -70 it has reached up to 0 to +5 degrees Celsius तक आ गया है. So it has a stabilizing effect on the atmospheric condition because there is dry air, feeble air circulation, rare occurrence of cloud. ये सब है. We know that aeroplanes usually flies through the lower layers of stratosphere. Stratosphere के lower layer से ये move कर रहे हैं हमारा aeroplanes. Why? The air is atmosphere is almost stable है. उधर ज्यादा precipitation नहीं है, thundering नहीं है, air तो almost dry है, तो feeble air है, air circulation ऐसा कुछ air का movement उधर ज्यादा नहीं है. ये सब के वजह से at stratosphere usually the aeroplanes are flying at the lower heights of stratosphere. And another one zone that is present in stratosphere is ozonosphere. Very important. This is where the importance of stratosphere. तो यहाँ ozonosphere है, तो ozone क्या कर रहा है? It will absorb the ultraviolet radiation that's coming from the earth. तो harmful radiation है इसका, तो ये ozone prevent करेगा. And this ozone का बहुत ज्यादा concentration कहाँ है? It is in stratosphere. Yeah, it is between 17 kilometer to 35 kilometer. That is the lower layer of stratosphere. में stratosphere का lower layer में you can see the ozonosphere or ozone layer is found at this place. So ozone plays a major role in regulating the thermal regime of the stratosphere. वो temperature क्या है? तो वो radiation आ रहा है, ultraviolet radiation आ रहा है, तो it will prevent the UV rays to escape. नीचे जाने के लिए नहीं देगा, तो क्या होगा? तो that is a thermally वो sun rays का साथ आ रहा है UV rays, तो इसका तो थोड़ा temperature भी होगा. Because of this temperature, the temperature of the stratosphere is increasing when comparing to troposphere. Troposphere में ऐसा ozone layer नहीं है, लेकिन instead in stratosphere, because of the presence of this ozonosphere, there is control over thermal regime. इसमें इसलिए तो यहाँ temperature थोड़ा ज्यादा है. And the transition zone between a stratosphere and a mesosphere is mesosphere. इसका ऊपर का जो sphere है, that is called mesosphere, and the transition zone which separates this stratosphere from this mesosphere is stratopause. That is stratopause. Tropopause हो गया stratosphere and troposphere के बीच में, and stratopause हो गया this stratosphere and mesosphere के बीच में. Then comes the mesosphere. First priority troposphere को, second priority stratosphere, and इसके ऊपर आएगा mesosphere that extend from 50 kilometer to 80 kilometer. This is on an average इसका height है, from 50 kilometer to 80 kilometer तक इसका height है. तो यहाँ क्या है? In again the temperature decreases with increasing height. वो troposphere में कैसा था? ऐसे stratosphere में because of the presence of ozone layer there is increase in temperature, and here what happens? यहाँ कुछ ऐसा layer नहीं है, तो यहाँ temperature again start decreasing with increase in height. At upper height of the mesosphere, the temperature reach up to -80 degrees. तो
पहले बहुत ज्यादा टेम्परेचर अभी हमारा बॉटम सरफेस में 35 तो इवन वी विल गो टू 50 डिग्री सेल्सियस तक वी विल गेट द टेम्परेचर। वो डाउन होकर ट्रोपोस्फियर के सबसे ऊपर आ जाएगा -70। अगेन वो उधर से बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो धीरे धीरे ऊपर जाते इट विल रीच अप टू 0 डिग्री टू 5 डिग्री तक उसका टेम्परेचर आ जाएगा। अगेन दैट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, उधर से क्या होगा, रिड्यूस होके दिस विल रीच अप टू -80 डिग्री at the top of the, even it's reached -130 degree Celsius at the top of the mesosphere. The coldest temperature in the Earth's atmosphere occur at the top of this layer. ये जो लेयर है मेसोस्फीयर का सबसे ऊपर होगा वो अर्थ एटमॉस्फेयर का सबसे कम टेम्परेचर, दैट इज मैक्सिमम अप टू -30 डिग्री सेल्सियस at the top of the mesosphere. And from there the mesopause starts, especially in the summer near the polar region. इसमें टेम्परेचर बहुत कम है। So and pressure, if you look, pressure is also very feeble, that is 0.01 millibar. पहले स्ट्रेटोस्फीयर में 1 millibar था, ट्रोपोस्फीयर में 100 millibar to 250 millibar था। यहाँ क्या है, वो थी बहुत कम हो गया प्रेशर, 0.01 millibar हो गया। देन फॉर्मेशन ऑफ, ये तो पढ़ने की जरूरी नहीं है, बट यहाँ हो गया नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स यहाँ बन जाएगा। ये कैसा ऐसा है, अभी डस्ट पार्टिकल स्ट्रेटोस्फीयर में डस्ट पार्टिकल नहीं है, ट्रोपोस्फीयर में डस्ट पार्टिकल है, इसलिए तो क्लाउड बन रहा है। लेकिन यहाँ कैसे आ गया, अभी मेटियोर्स बर्न होकर आएगा, तो इसमें से वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से कुछ डस्ट मेसोस्फीयर में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा डस्ट पार्टिकल उधर होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। ये तो याद रखना है, या टीजीटी है तो पूछने का चांस नहीं है, लेकिन पीजीटी है तो पूछेगा, देयर इज चांस फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ये भी याद रखना है। देन यहाँ ज्यादा मेटियोर्स, अभी आप नाइट में जाकर देखने से यू कैन सी ऐसा फॉलिंग स्टार्स देख सकता है ना, तो दैट इज यूजुअली मेटियोर्स बर्न होता है उधर। सो दिस इज मोस्टली हैपन इन मेसोस्फीयर। द अपर लिमिट इज कॉल्ड द मेसोस्फीयर व्हिच इज सेपरेट मेसोस्फीयर फ्रॉम थर्मोस्फीयर। तो यहाँ है, तो मेसोस्फीयर के ऊपर होगा थर्मोस्फीयर, तो थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में जो डिवीजन है दैट इज मेसोपोज। And from this mesopause, the temperature start rising in a certain way, very quick way. The temperature will start increasing. तो चार लेयर में, दो लेयर में टेम्परेचर कम होगा, दो लेयर में टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो now we are going to discuss about the thermosphere, the uppermost layer of the atmosphere. So thermosphere, temperature increase rapidly, very quickly the temperature will increase. At the top, the average height is 1700 degree Celsius. तो ऐसा है, इसका सबसे टॉप में एवरेज टेम्परेचर होगा 1700 डिग्री सेल्सियस, बट इट डज नॉट फील, वो उतना टेम्परेचर है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पानी में भी हमारा अभी हाथ डालने से वी विल गेट बर्न, लेकिन यहाँ 1700 डिग्री सेल्सियस में भी इफ वी पुट आवर हैंड्स आउटसाइड वी विल नॉट बर्न, बिकॉज द प्रेशर at this point is extremely very low. We know in the mesosphere itself it is 0.01 है, millibar है, तो यहाँ उससे कम है। तो because of very low pressure we don't feel the burning effect, we don't feel the temperature. इसलिए जब we are there we don't feel that there is 1700 डिग्री सेल्सियस उधर है, यह तो समझ में नहीं आएगा। And because of this temperature, the
the layer get its name thermosphere. यहाँ temperature बहुत ज़्यादा है. And this thermosphere is again divided into ionosphere and exosphere. Exosphere सबसे outer layer of the atmosphere है exosphere. And इसके बीच में होगा ionosphere. So from the term you can see it is there is presence of ions. That is charged particles होगा. Positive, negative charged particles इसमें होगा. That extend from 800 kilometer to 640, sorry, 80 kilometer to 640 kilometer. And it consists of mainly four main regions है. It's divided into different layers. One is D layer, then E layer, then F layer, and G layer. G layer is not detectable. So usually when we say in ionosphere, there is usually three regions है. One is D layer. यहाँ D layer में क्या है? It will reflect low frequency radio waves. जैसे because of the help of this we can अभी radios जो चलता है because of the presence of this ionosphere. Ionosphere with the help of ionosphere many अभी mobiles, radios ये सब चलाने के लिए this part of the atmosphere we can use. So in D layer it reflects low frequency radiation, and in E and F layer में क्या है? It reflects medium and high frequency radio waves को यहाँ reflect करेगा. कहाँ से? जो बाहर reflect करेगा. That is why this area we will say it as ionosphere. The presence of positively or negatively charged ion particles are there. Then comes the uppermost layer, that is exosphere. So X means outer, more outer part. The uppermost layer of the atmosphere. So ये भी पूछ सकते हैं, which is the uppermost part of the atmosphere. So in thermosphere it is exosphere, and it comes above 640 kilometer to 29,000 kilometer तक इसका extension है. And temperature at this area reaches up to 5500, that is 5568 degree Celsius तक इतना temperature है. फिर भी उधर जाने से भी we don't feel that temperature because of this very low atmospheric density. Atmospheric density और atmospheric pressure क्यों कम हो रहा है? Because उधर उतना air नहीं है, उतना वो थिकनेस एयर थिकनेस उधर नहीं है, प्रेशर डालने तक उधर नहीं है, क्योंकि उतना फीबल एटमॉस्फेयर है उसी एरिया में, तो उतना प्रेशर डालने के लिए कोई चीज उधर नहीं है. दैट इज व्हाई देयर इज वेरी लो प्रेशर इवन इन वेरी हाई टेम्परेचर. यूजुअली इफ द टेम्परेचर इज हाई, प्रेशर शुड बी लो, एंड इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो, प्रेशर शुड बी वेरी हाई. तो यहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा है, प्रेशर बहुत कम हो गया है. So these are the layers. If you look, troposphere. तो troposphere में कैसा है? टेम्परेचर 0 डिग्री 420 डिग्री के बीच में होना ना एवरेज. यहाँ से कहाँ तक आएगा? माइनस तक आएगा. यहाँ एक ट्रोपोस्फियर रीजन है, यहाँ कुछ चेंजेस नहीं है. यहाँ से टेम्परेचर धीरे, अभी देखो पूरा बढ़ गया है. कहाँ तक? यहाँ तक बढ़ गया है. एक्चुअली नियर टू 0 तक ये तो आ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया. देन क्या हो गया? अगेन इन मेसोस्फीयर टेम्परेचर स्टार्टेड डिक्रीजिंग. मैक्सिमम अभी 80 डिग्री -80 डिग्री तक ये तो कम हो गया है. देन इन थर्मोस्फीयर धीरे से बढ़कर जल्दी इसका टेम्परेचर जल्दी ज्यादा हो गया है, अप टू 60 डिग्री 1000 डिग्री ऐसा बढ़ के ऐसे जा रहा है. डायरेक्टली इट विल गो लाइक दिस. दैट एरिया वी विल से इट एज थर्मोस्फीयर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. तो दो जगहों पे टेम्परेचर ज्यादा है, सॉरी कम हो रहा है, एंड दो जगहों पे टेम्परेचर बढ़ रहा है. So that is the layer of atmosphere. And again in the structure of atmosphere में दूसरा है based on the chemical composition, atmosphere also being divided. इसके पहले हाँ, I will introduce two more things. अभी outer atmosphere में there is magnetosphere है. There is outer atmosphere, atmosphere के बाहर. तो atmosphere का अंदर का जो layers है
ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। इसके बाहर एक्सोस्फियर के जो एरिया है इसके साथ देयर इज मैग्नेटोस्फियर भी है, which is also characterized by वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, इसे बोलता है having charged पार्टिकल। यहाँ भी चार्ज, आयोनोस्फियर के बारे में बोल दिया, ऐसा यह मैग्नेटिक स्फीयर है, आयोनोस्फियर के जैसे मैग्नेटिक स्फीयर है। यहाँ क्या है, पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, दैट इज छोटा छोटा वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पार्टिकल्स है, उसको तो उधर ट्रैप करके रखेगा। सो इट विल लाइक सम डस्ट इज मूविंग अराउंड दिस अर्थ, अर्थ में ऐसा डस्ट मूव जैसा लगेगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज magnetosphere. Because of the presence of this, there is two kind of lightning glows. One is aurora australis and aurora borealis. ये नाम याद रखना है। This is actually cosmic glowing light. अभी सनलाइट जो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, वो जो चीज ट्रैप जो पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल्स है, उसके ऊपर सनलाइट आएगा, सो दैट विल स्टार्ट ग्लोइंग, वो ग्लो करेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस ग्लोइंग देयर विल बी टू काइंड ऑफ लाइटनिंग, कॉस्मिक लाइटनिंग के टू नाम्स दिया है। वन इज अरोरा ऑस्ट्रेलिस, डॉन मीन्स ग्लोइंग ना, अभी स्टार्टिंग जैसे मॉर्निंग, तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस इज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में वो ग्लो को, कॉस्मिक ग्लो को बोलेगा अरोरा ऑस्ट्रेलिस, एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर इट इज नोन एज अरोरा बोरेलियस। तो बोरेलियस एंड ऑस्ट्रेलियस ये दोनों है, सदर्न हेमिस्फीयर में बोरेलियस है एंड इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इट इज ऑस्ट्रेलिस। तो ये याद रखना है, दिस इज एक्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ atmosphere structure, but outside atmosphere you should remember these two names. abhi usually this helps to get light in the polar region. abhi polar region mein we know that 6 महीने तक sun नहीं है, तो उसी टाइम में उधर थोड़ा लाइट चाहिए, तो because of the presence of this aurora australis and aurora borealis, usually in the midnight में टाइम में उधर ऐसे एक ग्लो आ जाएगा इस polar region में, because of this auroras. And finally, structure based on chemical composition. तो यहाँ क्या है, there is two division, one is homosphere and second one is heterosphere. तो homo means same, hetero means different. तो homosphere में क्या होगा, same chemical compositions होगा, hetero में different chemical composition, that is the main difference. So represent lower atmosphere up to 90, there is homogeneity of various gas. अभी ऑक्सीजन इतना परसेंटेज है, नाइट्रोजन इतना परसेंटेज है, ये क्यों बोल सकते हैं, उधर एक नाइट्रोजन का इतना कॉन्सेंट्रेशन है, ऑक्सीजन का इतना कॉन्सेंट्रेशन है, सो वी कैन से देयर इज सम सॉर्ट ऑफ होमोजेनिटी इन द गैसेस। गैसेस में एक होमोजेनिटी है, लेकिन वो अपर एटमॉस्फेरिक एरिया above 90 kilometer where the gravitational force is low, we can't say, so it extends from 90 kilometer to 10,000s of kilometer. क्या होगा, यहाँ गैस का होमोजेनिटी नहीं है, यहाँ कंसिस्ट ऑफ मोलिकुलर नाइट्रोजन, एटॉमिक ऑक्सीजन, एटॉमिक हीलियम, एटॉमिक हाइड्रोजन, ये सब एटम्स और मॉलिक्यूल जैसा है, उसमें कुछ ऐसा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऐसा नहीं बोल पाएगा, यहाँ मॉलिक्यूल्स नहीं है तो एटॉमिक पार्टिकल्स है यहाँ ज्यादा, क्योंकि यहाँ वी नो दैट द gas concentration is comparatively less above this region, that is why it is known as heterosphere and homosphere. Not that much relevant, still you want to remember these terms, homosphere, same gaseous, homogeneity in gaseous combination, and heterogeneity in gaseous combination at heterosphere. If you look here, it's this is the area, 90 to 100 kilometer homogeneity है, that is just beneath the thermosphere तक, उसके ऊपर if you look, this is heterosphere, this is homosphere and this is heterosphere.
So that is about the structure and composition of atmosphere. Okay, इसी एरिया में कुछ डाउट है? Oh no sir. Okay, इसमें भी जो पोर्शन है वो हाईलाइट किया है, वो टर्म सब याद रखना है. ओके, जैसे नॉर्मल लैप्स रेट, इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर, ये सब चीज. Okay, can we stop for the day? Ji sir. Okay, okay then. Okay, See you thank you on- sir. Okay, Okay, good night sir. good night.